मेहनत करनी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेहनत का फल मीठा होता है, सभी को पता है। जिस तरह से मैंने आज तक जो प्रिपरेशन की है, तो मैं यही बिलीव करता हूँ कि मैच के पहले की जो प्रिपरेशन होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। प्रिपरेशन सही तरह से करना ये मेरे हाथ में होता है, जो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जब मैच में आप जाते हो बैटिंग करने, तब कोई ऐसे गारंटी दे के नहीं कह सकता कि आज मैं 100 बनाऊंगा या आज मैं 5 विकेट लेके वापस आऊँगा। तब मगर प्रिपरेशन की आप गारंटी दे सकते हो। जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए देखना चाहिए। मगर जो चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि ऊपर वाले के हाथ में होता है, मगर कोशिश करनी अपने हाथ में होती है। और उसके बाद ऑब्वियसली मैच में जब जाते हो तो हम कोशिश करते हैं, मगर कभी कभी रिज़ल्ट अच्छा लगता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता, कभी कभी अच्छा नहीं लगने के लिए वजह होती है, कभी कभी नहीं होती। तो आई जस्ट फील कि प्री मैच जो प्रिपरेशन होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। Fearless and the other way to describe that is confident, self-belief. I believe that if you are confident of your ability, if you are confident of your preparations, some people call it fearless, some people call it confidence. And I feel I'm confident of whatever I do. I fail sometimes, I succeed sometimes, so that's fair enough. It's a package deal. It comes with that package, failures and success. So I would put it differently. I'm confident and I trust my instincts. To me, pre-match preparation is extremely important because that's something which is within my control. When I walk into bat, I should know that yes, I've prepared to the best of my ability. I couldn't have done anything better. That is when I feel that I'm ready to go out and play. There is no player in the world who can actually walk out and say, today I'm going to score 100 or I will get minimum 5 wickets and come back. Sometimes it happens, sometimes it doesn't happen. But I believe in controlling the controllables, something where we don't have control on certain things. Those things you obviously cannot waste your energy in trying to figure out how can I control this. You would much rather focus all your energy on the things that you can control, get the best results possible. But making an effort is in your hands. Giving 100% is in your hands. Sometimes you end up with good results, sometimes you don't. Trying giving 100% is in your hands. That is what matters to me. It really doesn't matter, honestly, to look at the scoreboard where it's 20 runs and 2 wickets down or 200 runs and 2 wickets down, because if you're positive inside, it really doesn't matter. It just requires different planning sometimes and that vision. Sometimes, when you go in, it might be a tough phase to go through that tough phase, play out certain number of overs and then, gradually move on with the game. And then change the momentum gradually again. Obviously, if you are positive, then there is positive energy flowing in your body. The movements are smoother, thought process is smoother. But if there is doubt, then also your body is not going to move that well. Thought process is not clear. While facing delivery, you want to keep your mind as blank as possible and as empty as possible. So whatever comes your way, you immediately read that and you react to it. Basically, I would say that it requires vision and execution. For every individual, it is important to have some kind of exercise and lead a healthy life. For me, I feel, just the basic training just to keep in good shape, and then during the season and off season,
We have different plans, and sometimes it is about improving your fitness, and sometimes it is about just maintaining that level. So it depends, what phase you are going through. During the season, obviously, it is difficult to push hard all the time because you're playing matches. But just pre-season is the period where one would want to try harder and improve the fitness level. But generally, in between the matches, it is to do with just maintenance and recovery. You need a good recovery session so that you're fresh for the next game, and then go out there and perform equally well or even better. In any team sport, there are certain teams targets, and those targets should always be in the forefront. And then you will always find in a team sport, on a given day, there'll be certain individuals who would perform better than the other ones. You just need to understand that the guys who are in great form, the others have to play around them and chip in any whichever manner possible. And I feel great individuals and great performances build a team, and which produces brilliant performances. You need solid individuals who come together and play as a team, and then achieve the results which we all aspire to. It is fantastic to be part of Indian cricket team. Last so many years that I've been part of, I've thoroughly enjoyed. There have been ups and downs, but it has taught us a lot in life. Going with the team through those ups and downs is a terrific journey. I have thoroughly enjoyed being part of it. I think encouragement in sports or any profession, any field is extremely important, because it brings the best results. Along with encouragement, also to provide infrastructure and provide all the facilities which can enhance the performance of the players, and lay such a strong platform where the players really go out and work on certain things which are required as a professional athlete. If all those facilities are provided, then of course you will get results. Then the guidance from the right people concerned, because along with the talent, you also need direction. So that direction is extremely important. Once you have all these facilities, then any sportsman with the kind of encouragement expected, they will go out and try harder. That is what India as a nation would expect from everyone. It was Achrekar sir, my coach, and right from my school days. And even before that, it was my brother, Ajit, and then even till date, it's my brother that I regularly keep in touch with if there is anything that I need to discuss on my batting. And obviously in my school days, it was Achrekar sir who really helped me and worked as hard as me on my batting and generally on my cricket. So, I was so grateful. कोई भी प्रोफेशन में उतार चढ़ाव होते ही है। एक्चुअली अगर देखो तो अपने हेल्थ में भी उतार चढ़ाव होता है। कभी कभी खांसी होती है, कभी कभी ज़ुकाम होती है। तो ये सारी चीज़ें तो जनरली लाइफ में होती है। तो सिमिलरली मैं कहूँगा स्पोर्ट में भी यही है। हर दिन आप जाके 100 नहीं बना सकते या 5 विकेट नहीं निकाल सकते। कभी कभी फेलियर आती है तुम्हारे बीच में। ये सारी चीज़ें लाइफ में होती है, मगर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं अगर गिर गया तो वापस खड़ा होकर चलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नंबर 1 स्पॉट पे ऑब्वियसली इंडियन टीम है, तो इसकी काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि हमारा ये गोल था, एक टीम का गोल था कि हमें इस पोजीशन पे जाना है और जितनी लंबे तक इस पोजीशन में रह सके उसकी कोशिश करनी है। जब आप उस नंबर पे जाते हो तो आपको और मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसके लिए सबकी तैयारी है और सभी प्लेयर्स मेहनत कर रहे हैं काफ़ी, और किसी भी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ऑब्वियसली कोई चीज़ ग्रांटेड नहीं पकड़ रहे हैं हम। ऑलवेज जब जाते हैं तो पूरी प्रेपरेशन से जाते हैं मैच खेलने के लिए, और एक अच्छी प्लानिंग होती है उसके पीछे। इस टीम का हिस्सा होना ये बहुत बड़ी बात है, और हर एक पल काफ़ी स्पेशल रहा हुआ है, और यही उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी ऐसे ही चलते रहे।
सपना देखना बहुत इम्पोर्टेंट है और सपनों को चेज़ करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सपने आप देखते हो जब आप सोते हो और चेज़ कर पाते हो तो जागते रहते हो, तो जागना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कोई चीज़ें हम हर इंडिविजुअल हासिल करना चाहता है और हर इंडिविजुअल लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहता है, कुछ अचीव करना चाहता है, तो मैं यही कहूँगा कि मेहनत करनी इम्पोर्टेंट है और उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपके सर्टेन टारगेट्स चेज़ कर रहे हो तो उसके लिए एक प्लानिंग भी करना इम्पोर्टेंट होता है। उसका प्लानिंग के बाद एक स्टेप आती है, वो एग्जीक्यूशन होती है। चाहे बहुत सारे प्लान्स बनाओ मगर उन प्लान को आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर देन यू डोंट रीच एनीवेयर। तो एग्जीक्यूशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट।